All right, welcome to today's wellness education series. This is the first series where once you have your oils, a lot of you ask, what do I do with them next? So this presentation is about, I have oils, now what? So on this call, we have other team members that are all going to be speaking about a specific area as to how you can use these oils in your home. So feel free to reach out to any of us for questions, and we'll be here to support you. So now that you have your oils, I want you to remember maybe those three reasons that you started with those oils. So maybe if you had attended a class, you would have written down your three ailments that you wanted to focus on, or your three areas of health. Revisit those or rewrite what your three are going to be. What you can do is you can look up specific health goals, you can reach out to the person that enrolled you, your sponsor, or anyone else that's using these essential oils to be able to guide you along this journey as to how you can ensure that these essential oils that you've purchased are being utilized in the best way possible for yourself. We want to make sure that they're effective for you. So now let's review. Let's take a look at maybe some of the products that you have, as well as the ones that are going to support your health goals. So we have foundations, we have exercise and weight management, rest, manage stress, and reduce toxic load. Maybe you chose one of these areas to start with, or maybe you chose all of them. So depending on what they are, if they're starting with foundations, like your supplements, you're going to look at taking those on a daily basis. If it has to do with exercise and weight management, you're going to integrate these essential oils into your lifestyle to make these into a lifestyle choice and a lifestyle ease, because we want to make sure that we're implementing this in a way that it is easy for you to implement. A lot of us have day-to-day stress. How are we going to basically use these oils to support us for stress and wellness, to be able to reduce the stress that we're facing on a day-to-day basis, reducing toxic load in our homes by either skincare, dental care, laundry soaps? There's so many options that doTERRA offers. So again, coming back to what you had selected, it's always a great way to choose what you've selected and then also find out what you want to work on over the next couple months to put that plan together. Go ahead, Puno. Okay, so thanks, Zarine. So as Zarine was talking about, once you're having your oils, what is the first step that you do is you write about your intention and why did you bring that oil? And the next aspect, what I have experienced is that you need to simply enjoy them. Don't overthink. And one of the easiest way to start enjoying them is to diffuse them. So you can start by diffusing just 2 or 3 drops. In the morning, you can use for energizing blends like peppermint or wild orange, which will lift your mood and wake up your mind. And at night, you can use calming oils like lavender and breath that will help your system unwind. So think of it like creating small moments of well being throughout your day. And you can go ahead and do that with the diffuser. All right, Max, go ahead. Okay, thanks, Zarine. Thanks, Poonam. So we love to diffuse essential oils. I have them on all the time, morning and evening. But there's one more thing that I love to do is I have a drop of lemon first thing in the morning with a bit of warm water. The lemon essential oil, not lemon juice. There's a big difference in this. When you take the lemon essential oil, you can take it for an extended period of time. It's going to help clear up all of that congestion in the morning. It's really uplifting. It's bright. So when it's gloomy outside, lemon, one drop in water is like sunshine on a gloomy day. This is something you can even add to your bottle of water. If you go to the gym, take your peppermint and lemon with you. You're going to love it. Another great combination to have is lavender, peppermint, and lemon. Just one drop of each if you get a lot of allergic reactions, especially allergies to animals and cat hair as well. This is something that's going to help you. So one drop of peppermint, one of lemon, and one of lavender in a glass of water, and give this a try even in the evening. You can take any of the other essential oils which you can take internally. So some of them you want to avoid.
Again, check back with us to make sure that you know which ones to take and which ones not to. And one of the great resources for that is the Essential Life book. So grab your book if you don't have it already, because you'll get all of the information about which essential oil you can take, what time of day, what you take it for, and what it's going to do for your body. But having it in water, either in a glass of water or take it neat in your mouth and then follow with some water, or even add it to your bottle. I know a bunch of people who add MetaPower, about 15 to 20 drops into 1 liter of their bottle, and they're just drinking it through the day. Then you refill it and you drink it again. So it's an amazing feeling to have. This way you're getting a lot more water into your body as well, because it tastes so good. Thanks, Max. All right, so one of the things that we always ask, dilute, 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 right? The essential oils that you have purchased, if it's not in a roller bottle form, it is neat, meaning that there is no carrier oil that has been added to that essential oil. So this is where you are getting value for your money, and you're also able to customize how you're using those essential oils. So here you'll see in a 10 ml bottle, we give you the options and some varieties as to how you should be diluting these essential oils correctly. So for example, in a 10 ml bottle, for anyone less than 2 years old, 1/10 of it is going to be like your EO. So that could be between 1 to 7 drops. So depending on the age, anything 6 months or less, I recommend only doing 2 to 3 drops. Anything less than 1 month, like a newborn baby, you can still use these essential oils because they're so safe and so pure, but you have to make sure that you're using the right dilution ratios. When you're also talking about senior citizens, I recommend using similar dilution to 2 to 6 years old, because their skin is starting to become, again, more sensitive. So when we talk about dilution, the reason why we say to dilute it, it isn't diluting the effects of the essential oil. It is actually allowing the body to absorb it better, as well as covering a larger surface area. So whenever you're using your essential oils, you may be using them topically on that specific body part. So for example, if you have a little tummy ache, right, you're going to apply the essential oil across your tummy, right? That's where you're going to have those focus points. If you don't have a specific area, bottom of the feet, diluted again is a great way to do that. If you're using it aromatically, you can just put a drop neat into the palm of your hand and breathe it in that way. So depending on which essential oils that you're able to use or which ones you've purchased, lavender is one of the most gentlest essential oils, but it is also one of the most adulterated. So that's where coming back to use doTERRA, and the choice that you've selected is an amazing one. So you want to make sure that lavender oil can be used neat, so without dilution. But if you're looking for better absorption, if you're looking for better area coverage, always remember to dilute your essential oils. All right, so with supplements, now we want to make sure that they're part of your daily nutrition. So when we're using these supplements, or whether they're essential oils, we want to talk about how you can integrate them with ease and making them a daily part of your routine. So for example, if you have access to the VMG system, this is where you're going to be using these essential oils and these supplements on a daily basis. Start with half the dosage. If you feel that you don't want to bombard your system with all these beautiful nutrients, start with half a dosage of it, and then slowly increment and work your way up. And that's the same thing with essential oils. If you're looking to work towards having something that is a chronic ailment, this is where you can slowly work towards it, right? Because that ailment didn't just come up overnight. If it's something that is short term, something that's persistent, on just at one time, this is where you can use a higher dosage of essential oils and use that for that specific period. So this is where we recommend using the essential oils continuously over a period of time. You'll see that Max mentioned that she uses lemon essential oil daily in her water. That is a routine that you're creating for yourself. And as you continue to do that over a period of time, it sustains itself. So it's just by default, automatically remembering, as soon as I wake up in the morning, I'm going to take lemon essential oil in my warm water. Right after that, I'm going to start with my VMG. I'm going to just empty out a packet of VMG into another glass of water and drink that.
Whether I pair that with my E omegas or whether I pair that with my collagen, that's a great way to start the morning. That way, your body is full of the nutrients that it needs to be able to process those throughout the day, and you're supporting your beautiful body in a beautiful way. All right, so when we talk about the sample wellness box, we're going to include a little bit of Hindi as well here too. So I'm going to go over how you can access this sample wellness box, where you're going to be able to purchase like a VMG kit. So all of this is just an example, but say for example, you want to focus on your nutrition, you want to focus on metabolic support, oral hygiene, grounding, as well as energize. Right? So this kit is the perfect solution for that, where you have your VMG, your vitamin, minerals, and greens. Then you have your On Guard toothpaste, your MetaPower capsules. Balance is a great essential oil for grounding. Wild Orange for energizing, that energy boost, that slump that you might be feeling throughout the day. This is a great one to be diffusing or adding into your water. So when you package everything and sign up for LRP, your loyalty rewards program, this is where after your first month, you are then enabled to get a free product of the month. So you'll notice that I put a price value as well as a PV value. That PV value, anything over 125 PV product value before the 15th of the month, allows you to get a free product of the month that doTERRA determines. And it's a great way to introduce a new oil into your life or stock up on an extra oil that you might need. It also allows you to earn free product credits, so loyalty rewards points. So with that, when you start out, you'll be earning 10% back for every order you place. So for example, from the 14,768 rupees that you may be purchasing on this kit, you are then earning about 2,000 to 3,000 rupees worth of points from there, whether you have 10% or whether you have 30%. So if you're just starting, you're earning 10% back. If you've been with doTERRA for a year and you've been placing LRP orders on a monthly basis, you can earn up to 30%, right? That's huge. That's why you're able to collect and save those oils to get maybe some of the more expensive oils that you may not want to splurge on and get those for free. Max, do you want to take it over in Hindi? मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तो समझ लीजिए, अगर हर महीने doTERRA हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक ऑप्शन देती है LRP की, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। इसमें अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ ले रहे हैं, आपके एडवांटेजेस बढ़ते रहते हैं, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं और ये पॉइंट्स के साथ आप प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक एग्जाम्पल है जो आप हर महीने ले सकते हैं। VMG नया प्रोडक्ट है जो अभी अभी निकला है, इसे आपको लेना ही चाहिए, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए इसके बारे में। सब जो दवाइयाँ सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं फेंक दीजिए उसके जगह में आप VMG ले लीजिए। आपकी जो टूथपेस्ट हैं उनमें काफ़ी चीज़ें अननेचुरल हैं, आपके दांतों के लिए, गम्स के लिए ठीक नहीं है और हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हम अपने घर में अभी यही यूज़ करते हैं। पूरी फैमिली ने स्विच ओवर किया है, यही टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं। और ये जो मेटापावर के रेंज प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको ब्लड शुगर की इम्बैलेंस है, दिस इज़ ए मस्ट हैव, आपको ये लेना ही चाहिए। और अगर नहीं भी है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ये आपके एनर्जी लेवल्स को स्टेबलाइज कर लेता है, तो ये क्यों ना लें हम। तो अगर ऐसे हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं आपके गोल्स देख के कि आपको किस चीज़ के लिए सहायता चाहिए, कौन से ऑयल्स आप यूज़ करना चाहते हैं, हर रोज़ अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो कौन से ऑयल्स लेने चाहिए। मैं एक्चुअली खुद बैलेंस यूज़ करती हूँ रोज़, क्योंकि पूना में ट्रैफिक इतना ख़राब हो गया है कि हम घर से बाहर निकलते ही लोग जैसे पागल हो गए रास्ते पे। तो खुद को हम कैसे स्टेबलाइज करते हैं, आई एम यूजिंग बैलेंस। रोज़ मैं थोड़ा सा एक बूंद लेके यहाँ गर्दन के पीछे लगा देती हूँ, कान के पीछे लगा देती हूँ, यहाँ ऊपर लगा देती हूँ। एक बूंद 4-5 जगह में चला जाता है, बहुत ही मज़ेदार है। फिर गाड़ी आराम से चला के मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती हूँ। वाइल्ड ऑरेंज भी ऐसी चीज़ है कि आप खुश ही हो जाते हैं उसके साथ, खुश हो जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है उसके साथ। तो ये अभी VMG के बारे में 1 मिनट में बात करती हूँ। ये जो सप्लीमेंट है, इसमें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं
इसमें अपने हाउ डू यू से एंजाइम्स भी है, प्रोबायोटिक्स भी है, इसमें हर एक चीज है जिससे ये सप्लीमेंट्स आपके शरीर में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और रिटेन हो जाते हैं। उसका मतलब है कि फ्लश आउट नहीं हो रहे हैं। तो ये आप एक सैशे रोज अगर लेंगे, यही टूथपेस्ट रोज यूज करेंगे 2 बार दिन में, एक सवेरे एक शाम को, देख लीजिएगा बहुत सारे डेंटिस्ट भी बहुत खुश हो गए ये टूथपेस्ट के साथ, वो अपने पेशेंट्स को भी दे रहे हैं। और आप हमसे पूछिए, हम डेंटिस्ट के पास जाना, हमारा जाना ही बंद हो गया है ये टूथपेस्ट की वजह से। एंड ये जो मेटापावर की रेंज है, फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया है। ये इसकी ऑयल भी जो आती है आप पानी में डाल के पी सकते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट्स आप कंबाइन करते हैं एक ऑर्डर में, 125 पीवी मिनिमम अगर हो जाता है, पीवी क्या है, हर प्रोडक्ट का पॉइंट वैल्यू रहता है और पर्सनल वॉल्यूम भी रहता है। तो अगर 125 पीवी का ऑर्डर आप प्लेस करते हैं महीने की 15 तारीख से पहले एलआरपी के टेम्पलेट के साथ, तो आपको एक फ्री प्रोडक्ट भी मिल जाता है। और हर महीने आप जैसे बढ़ते जाते हैं, स्टार्टिंग मंथ 1 से मंथ 13 तक, आप 10% से 30% तक बढ़ते हैं और आपको 30% पॉइंट्स वापस मिल जाते हैं। सो इफ यू डू 157 पीवी का अगर आपने ऑर्डर किया, तो आपने अगर 1 साल के बाद ये ऑर्डर प्लेस किया है तो 47.1 पॉइंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। उसके साथ मेरे ख्याल से आई थिंक कोपाइबा 44 पीवी का है और वो काफ़ी महंगा है, 4,500 का है होलसेल प्राइस पे, मेंबर प्राइस पे 4,500 का है, तो वो आपको फ्री मिल सकता है। तो इसीलिए हम अपने पॉइंट्स भी ऐसे इकट्ठे करते जाते हैं ताकि हम साल के बाद शॉपिंग जा सकते हैं एंड हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसका मज़ा भी लेना चाहिए। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को पूछ लीजिए उनको क्या क्या चाहिए, उनके ऑर्डर्स एक्यूमुलेट कर लीजिए। एक बार आप प्लेस करोगे, ये वीएमजी आप एक्सपीरियंस करोगे, तो कभी आप दूसरी चीज़ें कभी देखेंगे नहीं, कोई दूसरे सप्लीमेंट्स को भूल ही जाएंगे। ऐसी बढ़िया चीज़ है, वी आर वेरी लकी टू गेट दिस इन इंडिया। Thanks, Max. Do you want to continue with the resources in Hindi? श्योर। अभी ऑयल्स तो हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस बीमारी के लिए कौन सी ऑयल हम देखें। तो अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है या कहीं पैरों में दर्द हो रहा है, काव्स में दर्द हो रहा है, किसी को समझ लीजिए फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो इन जड़ी बूटियों को हम कैसे यूज कर सकते हैं, किसको मुंह के अंदर डालना चाहिए, किसको कहाँ लगाना चाहिए शरीर पे, अगर नस में तकलीफ हो रही है या आपको समझ लीजिए वर्टिगो है जैसे मुझे हुआ करता था, अगर आपको सायाटिका है तो कौन सा कहाँ लगाना चाहिए, अगर किसी को हार्ट के मसल्स में कोई तकलीफ हो रही है कौन सा कहाँ यूज करते हैं, वो सब आपको ये किताब में पता चलेगा। ये एसेंशियल लाइफ जो बुक है, अगर ये किताब मेरे पास नहीं होती तो फिर मैं हिंदी इज गॉन टोटली, माय जेंडर्स गॉन रॉन्ग, लेकिन अगर ये किताब मेरे पास नहीं था शायद मेरा एक्सपीरियंस ऑयल्स के साथ इतना एक्सटेंसिव नहीं होता, मैं लोगों को मदद नहीं कर पाती। इस किताब की वजह से मैं इतना सीख चुकी हूँ और सीख रही हूँ और रोज सीखती हूँ। तो ये किताब जो है डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, ये सबसे मशहूर रेफरेंस गाइड है। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, समझने का तरीका होता है, 600 अलग एलिमेंट्स हैं इसमें, आप वहां से देख सकते हैं, इंडेक्स किए गए हैं। तो आप पहले अपनी तकलीफ ढूंढ लीजिए, उसमें कुछ सजेशंस दिए हैं, 5 अलग ऑयल्स देते हैं और कभी कभी 6 7 8 भी हो जाते हैं। फिर वो पेज पे खोलते हैं जहाँ बॉडी सिस्टम समझाए गए हैं। बॉडी सिस्टम्स का मतलब है अगर आपकी एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो इतना कुछ सिखाया गया है कि हर कोई अपने घर में सब लोगों की तकलीफें संभाल सके नेचुरली ये प्रोडक्ट्स के साथ। ये प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि ये प्योर हैं और इनसे प्योर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो इन ये जो काम हम सब कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने हमारी मदद की है। जैसे जरीन ने मेरी जिंदगी बदल ली है ये प्रोडक्ट्स के साथ, और मैंने कहा ठीक है मैं तो ठीक हो गई, अभी मैं तो सब लोगों को बताना चाह रही हूँ कि वो अपने घर में ये जड़ी बूटियां ले आए और अपने फैमिली को संभाल सके। दिस इज द वर्क दैट वी आर डूइंग। तो ये किताब को सबके पास होना ही चाहिए। Thanks, Max. So, just to summarize, this is a book that once you've started with your oils, or even before you start with your oils,
this is something that you should have in your home. It is a very easy to read guidebook, and it allows you to understand the oils that you have, as well as go through and see other oils that you can use to support your own wellness lifestyle, as well as others around you, so that you can also be able to share and guide them alongside with these essential oils. So, when you start this journey, you right now, if you're watching this through one of us, are already partnered with someone or one of us. If you're not already partnered with us, or if you have questions, feel free to WhatsApp myself at the number that I've shared. If you have a sponsor or an enroller, reach out to them first for guidance, and then you can always reach out to me. Just let me know who you're working with, and we can make sure that you're understanding exactly how to use each of these essential oils in your home. Go ahead, Ambandi. थैंक यू जरीन। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं नीना पराड़कर, डुटेरा वेलनेस एडवोकेट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और डुटेरा एसेंशियल ऑयल के बारे में मैं कुछ अपने बहुत दिल से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। डुटेरा एसेंशियल ऑयल बहुत ही शुद्ध, सुरक्षित और सीपीटीजी ग्रेड वाले सर्टिफाइड एसेंशियल ऑयल है, जो हम बिंदास किसी को आंखें मूंद करके दे सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि ये प्योर है और हम इंटरनली इसे दे सकते हैं। इंटरनली देने के लिए किसी को भी हमें उसकी सारी हेल्थ इशू के बारे में जानकारी लेनी होती है, और उसके बाद ही हम अरोमा थेरेपिस्ट या हमारी टीम है जो हिल टीम हिल जो है, हम लोग हीलिंग का काम करते हैं। डुटेरा एसेंशियल ऑयल की कितनी ड्रॉप, कब, कैसे और किस टाइम पे टॉपिकली या इंटरनली लेना है या डिफ्यूजर में एरोमेटिकली लेना है, ये हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो हम लोग जब काम करते हैं तो हमारी फिलोसॉफी जो है, ये हम डुटेरा एसेंशियल ऑयल बेचने के लिए नहीं, हम किसी को कुछ देने के लिए या किसी के बारे में कुछ अच्छा समाज सेवा या फिर एक हेल्थ देने का काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही सुकून देने वाला काम होता है। किसी की चिंता कम करती है हमारी। एक कोई बॉटल हम किसी को देते हैं तो उससे वो यदि रिलीफ फील करता है, अपनी नींद अच्छी से ले पाता है, सुकून महसूस करता है या फिर दर्द से राहत पाता है, तो हमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है कि हमने किसी को बहुत अच्छी हेल्थ दी है। तो एक बूंद हमारी कितनी सहायता करती है, ये करने के लिए हम लोग टुटेरा वेलनेस एडवोकेट समाज में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और जब आप डुटेरा शेयर करते हैं किसी को, तो किसी परिवार को, अपने मित्रों को और अपने समुदाय को एक केमिकल फ्री, सेफ और नेचुरल हेल्दी लाइफ की ओर ले जाते हैं। इससे बड़ा कोई समाधान नहीं है। तो मैं तो जब से डुटेरा में आई हूँ, वाकई में फैन हो गई हूँ। और अपने ओल्ड एज, मेरे पास 3 सीनियर सिटीजन हैं, 70 से लेके 90 तक के। और उसके बाद हम लोग भी, और मेरे बेटे को भी एसेंशियल ऑयल से ही उनको सेफ रखती हूँ। और उसके जैसा बड़ा कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई काम होगा। उनके चेहरे पे खुशी, जैसे माँ को मैंने कई सालों से बीमार देखा है, और जब ये एसेंशियल ऑयल यूज करने लगी है तो वो बहुत अच्छा फील करती है। और वो मुझे बोलती है, डॉक्टरों ने ठीक नहीं किया जितना इसकी दवाइयों से ठीक हुई हूँ। तो एक डॉक्टर के बराबर का दर्जा मुझे सिर्फ एसेंशियल ऑयल के थ्रू मिलता है। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ डुटेरा की। और थैंक यू जरीन और रितु मैम, जिन्होंने मुझे डुटेरा ज्वाइन करवाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks everyone for participating in this call, and thank you for sharing it out. Thanks. Thank you. Good night. Bye.